Students, in this session of error analysis, we will discuss remaining part of error, that is combination of error or propagation of error. For discussing that article, first of all listen, in the previous time we have discussed two values of physical quantity, true value and measured value. We have already discussed true value is the exact value of physical quantity and measured value the value which is obtained through experiment. Suppose the length of true value of length of that marker is 8 centimeter. So 8 centimeter is the true value of the length of that marker. Now we measure the length with the help of different instrument, and when we measure the length of that marker with by other instrument, length can be measured accurately or can be measured some error. If in the measurement there is error, then measured length can be greater than true value or less than true value. That's why measured length can be greater than, what is the true value of that length of marker? 8 centimeter. So measured length can be 8.3 centimeter or can be 7.8 centimeter. Means to say measured length can be greater or less than the true value. The difference between measured value and true value, we have said that absolute error. So absolute error equal to measured length minus true value. Absolute error equal to measured length minus true value. Look, absolute error delta, if measured length is 7.9 centimeter and true value is 8 centimeter. What is the absolute error? Absolute error is true value, measured value minus measured value minus true value. Yes, if measured length is 7.9 centimeter and true value is 8 centimeter, then what is the absolute error? Absolute error is minus 0.1 centimeter. That is the absolute error is minus 0.1 centimeter, means absolute error have negative sign. Now if measured value is 8.2 centimeter, then if measured value is 8.2 centimeter, then what is the absolute error? Delta A equal to absolute error. That is the symbol of absolute error. Delta A is the symbol of absolute error. So absolute error equal to 8.2 centimeter minus 8 centimeter. So what is the absolute error? 0.2 centimeter. So look here, absolute error have positive sign. Absolute error have positive sign. Means to say absolute error can be less, can be negative or positive. And yes, so देखो बच्चों, इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस की थी, दो वैल्यू डिस्कस की थी, एक थी मेजर्ड वैल्यू, एक थी ट्रू वैल्यू. ट्रू वैल्यू होती है एग्जैक्ट वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, और मेजर्ड लेंथ मेजर्ड वैल्यू जो आपने एक्सपेरिमेंट से ऑब्टेन की है. अब सपोज मेजर्ड लेंथ है आपकी 7.9 सेंटीमीटर और ट्रू वैल्यू है 8 सेंटीमीटर. तो एब्सोल्यूट एरर क्या होगी? मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, 7.9 माइनस 8 माइनस 0.1 सेंटीमीटर. तो ये माइनस 0.1 सेंटीमीटर बता रहा है एब्सोल्यूट एरर, यानी कि एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव हो सकती है और एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी हो सकती है यदि मेजर्ड लेंथ ट्रू वैल्यू से ज्यादा है, मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से ज्यादा है, तब मेजर्ड वैल्यू 8.2 सेंटीमीटर माइनस 8 सेंटीमीटर, दैट इज 0.2 सेंटीमीटर. सो एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. यस, तो यस, नाउ आफ्टर डिस्कसिंग दैट एब्सोल्यूट एरर कैन बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव, now we discuss combination of error.
in the combination of error, look, if quantities are correct, then if we put these correct value in the different mathematical operation, we get the correct value. And if quantities are wrong, then we get the wrong value of physical quantity when we put a different mathematical operation. Look, combination of errors means apply the errors in different mathematical operations. What are the different mathematical operations? Multiply, divide, addition, subtraction. If during these mathematical or multiple operations, if in these mathematical operations, if you put the correct value of physical quantity, then you get the correct value of result. And if you put the wrong value of physical quantity, you will be get the wrong value of physical quantity. तो बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर. कॉम्बिनेशन ऑफ एरर देखिए, हम मैथमेटिक्स में चाहे फिजिक्स हो गई चाहे मैथमेटिक्स हो गई, कई फार्मूले आते हैं. फार्मूले में किसी फार्मूले में एडिशन है, किसी में सब्सट्रैक्शन है, किसी में मल्टीप्लाई है, किसी में डिवाइड है. अब उन फार्मूलों में भी आप एग्जैक्ट वैल्यू पुट करोगे, ट्रू वैल्यू पुट करोगे तो ट्रू रिजल्ट मिलेगा, और यदि आप इनकरेक्ट वैल्यू रॉन्ग वैल्यू पुट करोगे तो रॉन्ग रिजल्ट मिलेगा. तो हम डिस्कस करेंगे इन डिफरेंट मैथमेटिकल फॉर्मूलों में कैसे हम एरर कैलकुलेट करेंगे. नाउ combination of error means how we calculate the error in during different mathematical operations. So first mathematical operation, error involving addition is, so look, let us consider two physical quantities have true values. So error involving addition, let us consider two physical quantities have true values of, these physical quantities are A and B. These are the true value, and measured value of one physical quantity is A plus minus delta A. Delta A is the absolute error and A is the true value. So measured value can be greater than true value or less than true value. That's why we take plus minus. And other quantity have measured value B plus minus delta B. तो देखो बच्चों, दो फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनकी ट्रू वैल्यूज ए और बी हैं, और मेजर्ड वैल्यू ए प्लस माइनस डेल्टा है और बी प्लस माइनस डेल्टा बी है. प्लस माइनस ये बताता है कि मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू, ए तो ट्रू वैल्यू और डेल्टा ए क्या है, ए की एब्सोल्यूट एरर. ऐसे बी ट्रू वैल्यू और डेल्टा बी की एब्सोल्यूट एरर. प्लस माइनस ये बताता है कि मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, डिपेंड करेगा एक्सपेरिमेंट पे. Now there are different mathematical operations in physics or mathematics in which we undergoes addition. Suppose, for example, equivalent resistance in series combination R equal to R1 plus R2 is addition of two temperature of first body plus temperature of second body. So look, if we put the true value in the addition, then we get the true value of result. Suppose when we add A and B, true values of A and B, when we add, then we get the true exact result, that is Y. Now if we put the measured value in addition, it measured, what is the measured value? A plus minus delta A. So in place of A, we put the A plus minus delta A, and in place of B, we put the plus. In place of B, we put the B plus minus delta B. Then we get when we put the measured value are less accurate. They have an error. A is the true value and delta is the absolute error in A. B is the true value of B and delta B is the true value of absolute error in B. Then we get the incorrect result.
Suppose incorrect result. Suppose in incorrect result, absolute error is delta y. So y is the true value of result, and delta y is the absolute error in the addition. So y plus minus delta v. When we put the true value, exact value in addition, we get the exact result, that is y. This is the true value of the addition. And when we put the measured value, means value with error, then we get the result also with error. So true value of result is y, and we let assume that absolute error of the result is delta y. Then what is the measured value of the result? After addition, y plus minus delta y. Now open the bracket. So a plus minus delta a plus b. Now open the bracket, plus into plus, plus into minus, minus. So plus minus delta b. Rearrange the term. A plus b plus minus delta a plus minus delta b. Now from equation, this is the equation 1. From equation 1, in place of a plus b we can put y. So y plus minus delta a plus minus delta b. So is, so we get y plus minus delta y equal to y plus minus delta a plus minus delta b. Y cancel from both sides. So plus minus delta y plus minus delta y equal to plus minus delta a plus minus delta b, where delta y is the absolute error in addition, delta a absolute error of a, delta b is the absolute error of b. In numerical, we calculate the maximum error, and for maximum error we require only plus formula, plus sign in the formula. So for numerical purpose we neglect the negative sign. So what is the formula for numerical purpose? Delta y equal to delta a plus delta b. It means what we conclude? We conclude if two quantities are in addition, then the absolute error of these addition is equal to absolute error of first quantity plus absolute error of second quantity. तो बच्चों देखो, जब दो क्वांटिटी एडिशन में है तो यदि हम ट्रू वैल्यू रख रहे हैं एडिशन में तो हमें ट्रू रिजल्ट मिल रहा है, और जब एरर मेजर्ड वैल्यू वैल्यू विद एरर के साथ रख रहे हैं तो हमें रिजल्ट भी एरर के साथ मिल रहा है. ये तो ट्रू वैल्यू हमने अज्यूम कर लिया कि एडिशन के रिजल्ट में एब्सोल्यूट एरर डेल्टा वाई है, तो हमने वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई लिखा. प्लस माइनस ये बताता है कि रिजल्ट एग्जैक्ट रिजल्ट से ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है. अब हमने ब्रैकेट ओपन कर दिए, ए प्लस बी को वाई लिखे, वाई से वाई कैंसिल हो गया, ये आ गया. तो इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है? डेल्टा वाई क्या एब्सोल्यूट एरर वाई की, यानी कि एब्सोल्यूट एरर इन एडिशन इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी प्लस एब्सोल्यूट एरर ऑफ सेकंड क्वांटिटी. हम न्यूमेरिकल में जब जितने भी हम न्यूमेरिकल करेंगे उसमें हम खाली प्लस साइन कंसीडर करेंगे. तो प्लस साइन यदि कंसीडर करें मैक्सिमम क्यों करेंगे? क्योंकि हमारा पर्पज है मैक्सिमम एरर कैलकुलेट करने का. तो तब फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. नाउ नेक्स्ट combination. Now error involving subtraction. Assumptions remain same. There is two quantities have true value a and b, and their measured value are a plus minus delta a and b plus minus delta b. Now if we put these quantities, if we put the true values of these quantities in subtraction, then we get the true value of the result of subtraction. So a minus b equal to y. Y is the result of subtraction of the true values. So this is the true value of the subtraction, that because we put subtract the true values of physical quantity. Now if we put the measured value in the subtraction, in place of a plus minus delta b, and in place of b we put the b plus minus delta b. Now open the bracket. So minus b
plus into minus, minus, minus into minus, plus. Now rearrange the term. So a minus b plus minus delta a plus minus plus delta b. In place of a minus b, equation 1 we can put y cancel out. So plus minus delta b equal to plus minus delta a minus plus delta b. So what we get the result? Delta y is the absolute error in y. So absolute error in subtraction equal to absolute error of first quantity plus absolute error of second quantity. For numerical purpose, we only consider the plus sign. So if we consider plus sign, then we observe that result of formula for calculating the absolute error in addition and absolute error in subtraction is same. तो देखो बच्चों, जब दो क्वांटिटी सब्सट्रैक्शन में है तो यदि हम ट्रू वैल्यू सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें ट्रू रिजल्ट मिलेगा। ए और बी की ट्रू वैल्यूज को हमने सब्सट्रैक्ट, दो फिजिकल क्वांटिटी जिनकी ट्रू वैल्यूज ए और बी है, जब उन्हें सब्सट्रैक्ट किया तो ट्रू वैल्यू मिला रिजल्ट का, जो कि वाई है सब्सट्रैक्शन का। अब हमने मेजर्ड वैल्यू पुट की। जब मेजर्ड वैल्यू पुट की ए और बी की तो हमें मेजर्ड मतलब इनकरेक्ट वैल्यू, तो हमें रिजल्ट भी इनकरेक्ट मिलेगा। माना y की रिजल्ट की एब्सोल्यूट एरर, सब्सट्रैक्शन की एब्सोल्यूट एरर डेल्टा y है, तो हमें रिजल्ट क्या मिला? y प्लस माइनस डेल्टा y। मतलब मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। जितनी कम या ज्यादा होगी वो क्या कहलाती है? एब्सोल्यूट एरर। सो y प्लस माइनस डेल्टा y। डेल्टा y क्या है? y की एब्सोल्यूट एरर। अब हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया। ब्रैकेट ओपन करते ध्यान दीजिए, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस बी, और माइनस जब प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस इंटू माइनस माइनस, और माइनस इंटू माइनस प्लस। अब टर्म्स रिअरेंज कर ली, ए माइनस बी को वाई पुट कर दिया, कैंसिल आउट हो गया। तो फॉर्मूला आया प्लस माइनस डेल्टा बी इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। न्यूमेरिकल के पर्पज से हमें खाली प्लस साइन कंसीडर करना है। प्लस साइन कंसीडर करें तो क्या आएगा? डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो हम क्या देख रहे हैं कि फार्मूला एडिशन और सब्सट्रैक्शन का सेम है। देयर इज सेम फार्मूला फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। फॉर कैलकुलेटिंग द एब्सोल्यूट एरर इन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन देयर इज सेम फार्मूला। नाउ एरर इन प्रोडक्ट is now error involved in product. There are various formulae in physics in which multiply. Yes, so there is various formulae in which multiplies take place. Suppose example of area equal to length into width and distance speed into time. So if for the area, if length and width have accurate value, then we get the accurate result of area. And if length and width have wrong value, or there is some error in the measurement of length and width, then in the multiplication, when we get the area have also some error in the measurement. So we discuss how we calculate the error in product. So assumptions are same. There is two physical quantities have true values a and b, and measured values are a plus minus delta a and b plus minus delta b. Now if true values are undergoes in product, for true value a and b, we take the multiplication true values a and b, then we get the true value of the product, that is y. Now we put the measured value of one physical quantity a plus minus delta a in place of a plus minus delta b, and in place of b plus minus delta b put. Now take a common from this. So when we take a common, then in bracket 1 plus minus delta a upon a, and when we take the b from that bracket common, so b in bracket 1 plus minus delta b. A and delta a are separate quantities. Delta is the absolute error in a. This is not that you take a common and 1 plus minus delta. Here a is, but here is a is not present. So multiply and divide by a, multiply by term common and divide remain same. In same manner,
From that bracket we take the b common. Now rearrange the term. In place of ab you put the y, and so we get y plus minus delta y. Now y here in multiplication, so when it come in left hand side it come into divide. Now denominator, remove the denominator, so y upon y, separate the denominator, y upon y plus minus delta y upon y upon y 1, so 1 plus minus delta y upon y. Now open the bracket, so 1 first of all 1 multiply by that, so 1 into 1 into plus minus delta b upon b, so plus minus delta b upon b. Now multiply by that, plus minus delta a, so plus minus delta a into 1 plus minus delta a upon a, and plus into plus, minus into minus plus, delta a into ab, delta a into delta b upon ab. Now delta a and delta b are the very small term and ab are the large term, so denominator is small and numerator is small and denominator is large. That's why this quantity is very less than 1. That's why we neglect delta a into delta b. When we neglect the delta a into delta b, we get the delta y upon y equal to delta plus minus delta a upon a plus minus delta b upon b. For numerical purpose, if we discuss, we only consider the plus sign. So in terms of plus sign, if we consider the formula, then delta y upon y equal to plus delta a upon a plus delta b upon b. Why we take positive sign for the numerical purpose only? Because we calculate the maximum error in the numericals. Yes, so delta y is the absolute error in y, and delta a is the absolute error in a, and delta b is the absolute error of b. So you know that absolute error upon true value is the relative error of fractional error. So when two quantities are in product, then how we calculate the error? Then when two quantities are product, then it can be written for error absolute relative error of product equal to relative error of one quantity plus relative error of other quantity. तो देखो बच्चों, जब दो क्वांटिटी प्रोडक्ट में है तो यदि आप ट्रू वैल्यू रखेंगे उन क्वांटिटीज की, आपको ट्रू रिजल्ट मिलेगा प्रोडक्ट में, और यदि आप मेजर्ड वैल्यू या रॉन्ग वैल्यू पुट करेंगे तो आपको रिजल्ट भी रॉन्ग मिलेगा. हमने माना रॉन्ग रिजल्ट जो है ट्रू रिजल्ट से डेल्टा वाई कम या ज्यादा हो सकता है, तो जितना डिफरेंस आता है उसे कहते हैं एब्सोल्यूट एरर. तो प्लस माइनस बताता है कि वाई ट्रू मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है. तो वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई. फिर हमने ए कॉमन ले लिया. अब देखिए ए कॉमन ले रहे हैं, यहाँ तो ए है, यहाँ ए नहीं है. डेल्टा ए सेपरेट क्वांटिटी है, ए ट्रू वैल्यू है, तो ट्रू वैल्यू यहाँ तो है यहाँ नहीं है, तो हमने क्या करा, ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया. मल्टीप्लाई बाई टर्म कॉमन आ गई, डिवाइड वाली एज इट इज यहाँ लगी. ऐसे हमने डिवाइड में रही. ऐसे हमने बी प्लस माइनस डेल्टा बी में से बी कॉमन लिया, ए बी, फिर टर्म्स रीअरेंज कर ली, ए बी को वाई को डिवाइड में लेगा, ये आ गया. अब ब्रैकेट ओपन किया तो 1 into 1, तो 1 into प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, फिर इससे मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस इंटू प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी अपॉन ए बी. डेल्टा ए और डेल्टा बी बहुत स्मॉल टर्म है, जैसे 0.1, 0.2, 0.1 इंटू 0.2 क्या होता है, 0.1 इंटू 0.2, 0.02, तो और छोटी टर्म हो गई. तो इनके प्रोडक्ट से न्यूमरेटर को जो हम प्रोडक्ट कर रहे हैं तो और छोटी टर्म मिल रही है. और ए बी ट्रू वैल्यूज है ए और बी की, जो कि लास्ट टर्म है. जैसे एक 10 है, दूसरी 12 है, तो 10 इंटू 12 120. तो डिनोमिनेटर तो लार्ज है और न्यूमरेटर स्मॉल है, so that fraction is very less than 1. so less than 1 होने की वजह से हमने इसे नेग्लेक्ट कर दिया. नेग्लेक्ट करके तो यहाँ से डेल्टा वाई अपॉन वाई इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन बी, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन ए. तो इससे क्या प्रूफ हुआ, हम न्यूमेरिकल के पास पर्पज से बात कर रहे हो, प्लस साइन के साथ ही फॉर्मूला कंसिडर करेंगे. प्लस साइन के साथ कंसिडर करें तो हमें क्या मिलता है कि एब्सोल्यूट रिलेटिव एरर इन प्रोडक्ट इक्वल टू रिलेटिव एरर इन फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी प्लस रिलेटिव एरर ऑफ सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी. Now next, error involving quotient or division.
There are some formulae in which there is divide is applied. Suppose speed equal to distance upon time, density equal to mass upon volume. If mass and volume are true values, exact value, then we get the value of density exact. And if mass and volume are incorrect or they have some error in the measurement, then we get the density with also error. So means to say, if there in the different formulae there is division can be also applied. So how we calculate the error in division? तो बच्चों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि डिवीजन में एरर कैसे अप्लाई होगी. तो देखिए, फॉर ट्रू वैल्यू इफ बाई फॉर ट्रू वैल्यूज when we divide the true value of physical quantity A upon B, then we get the true value by. Now if we divide the measured value of the physical quantity, in place of A we take the A plus minus delta A, and in place of B we take the B plus minus delta B. B plus minus delta B take in numerator, then B plus minus delta B whole power minus 1. Now take A common, so A into bracket 1 plus minus delta A upon A. Now here we take B common, but whole power minus 1. Then we take the B common, B will be with negative sign, B to the power minus 1 into bracket 1 plus minus delta B upon B whole power minus 1. Now B to the power minus 1 can be written as 1 upon B. So A upon B into bracket 1 plus minus delta A upon A into bracket 1 plus minus delta B upon B whole power minus 1. A upon B from equation 1 we can put by. Now there is a mathematical tool, binomial theorem. According to binomial theorem, look, what is binomial theorem? 1 plus x whole power n equal to 1 plus nx test. Other terms we neglect. Why we neglect? Because here where we want to apply the binomial theorem, and we apply the binomial theorem in this form, this equation. So in this equation, delta x, in place of x, this term delta b upon b take place. Delta b is a small term, 0.1, 0.2, and b is the large term, true value of physical quantity. This is 12, 16, 8. So numerator is small and denominator is large. That's why this quantity is very, very less than 1. And here when we open the 1 plus x whole power n, 1 plus nx plus x square, n into n minus 1 upon factorial 2x square, then x cube. Here x is that. So when we take the square of delta b upon b, cube of delta b upon b, this become very, very less than 1. That's why they can be negligible. And when they can be negligible, that's why we neglect large term. We only expand this 1 plus x whole power n, 1 plus nx, because other terms are very, very in simple way, other terms are very, very less than 1 in this case. So using binomial theorem, 1 plus x whole power n equal to 1 plus nx s so on is put in equation 2. 1 plus minus delta b upon b whole power minus 1. Look, in place of n we take the minus 1, and in place of, so here minus 1, and in place of x we put plus minus delta b upon b. So when in place of n we put the minus 1, and in place of x we put the plus minus delta b upon b. So minus into plus minus, and minus into minus plus. That's why 1 minus plus delta b upon b. Look, we apply 1 plus x whole power n equal to 1 plus nx. Other term we neglect because these become very, very less than 1. In the equation, 1 plus minus delta b upon b whole power minus 1. So we open according to that. So 1 plus, in place of n we put minus 1, and in place of x we put plus minus delta b upon b, plus minus delta b upon b.
plus minus. Now we open the bracket, then plus into minus, minus, minus into plus, minus, and minus into minus plus. So 1 minus plus delta b upon b. That's why using binomial theorem 1 plus x whole power n equal to 1 plus nx dash whole power n we apply. Then you put in equation 2, 1 plus delta b upon b whole power minus 1 equal to 1 minus plus delta b upon b. In place of that, we value put. Now, y take in left hand side, open the bracket. So when we open the bracket, 1 multiply by that term, 1 into 1 into minus plus delta b upon b. Now plus minus delta b a upon a, multiply by that. So plus minus, so when 1 into 1 and 1 into minus plus delta b upon b. Now plus minus delta a upon a, when multiply by 1 plus minus delta a upon a. Now plus into minus, minus, minus into plus, minus delta a into delta b upon ab. Now denominator takes separate, so y upon y plus minus delta y upon y upon y 1 cancel out, and neglect delta a upon a into delta a into delta b upon ab. Yes, in equation 3 neglect delta a into delta b upon ab because delta a into delta b upon ab is very very less than 1. Then we obtain from equation 1 plus minus delta y upon y equal to plus minus delta a upon a minus plus delta b upon b. So when two quantities are in division, then what is the formula for calculating the error? The result, the absolute error of the product, the absolute error of the result equal to absolute error of first quantity plus absolute error of second quantity. For numerical purpose, we neglect the minus sign, we only consider the plus sign. And if we consider the plus sign, then we observe that formula for calculating the error in division is same as the formula for calculating the error in product. तो बच्चों आपने देखा y upon y equal to delta a upon a plus delta b upon b. न्यूमेरिकल के पर्पज से हम माइनस साइन नेग्लेक्ट करेंगे तो हम देखते हैं कि फार्मूला हमें वही मिला जो हमें प्रोडक्ट में मिला था कि डिवाइड से जो रिजल्ट में एब्सोल्यूट एरर इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी प्लस एब्सोल्यूट एरर ऑफ सेकंड क्वांटिटी. So what we conclude, formula for calculating the error in addition and subtraction is same and in division and product is same. Yes, now yes students, for numerical purpose we will discuss here two approach. In note, look, the derivation is not our syllabus. We can only discuss formula for numerical purpose. We will discuss only for formula for numerical purpose. Look, first, if y equal to a to the power m, if any formula has powers, then how that can be converted into error? It convert into error a formula delta y upon y equal to m into delta a upon a. तो देखो बच्चों, कोई भी फार्मूला हमारे पास ऐसे है जिसमें पावर्स है क्वांटिटी पे, y इक्वल टू a टू द पावर m है, तो इसे हम एब्सोल्यूट एरर में कैसे चेंज करेंगे? डेल्टा y अपॉन y इक्वल टू m इंटू डेल्टा a अपॉन a. Yes, where delta y absolute error in y is the true value, so this is the relative error of y equal to power into relative error of a. Now, if formula is such that there is multiplication, division, powers, all are take place
y equal to a to the power m into b to the power n upon c to the power p into d to the power q. If we obtain that type of formula in numericals, then how we solve it? How we change in the absolute error? Delta y upon y equal to m into delta a upon a plus n into delta b upon b, and divide quantity for error, divide will be also in plus into p into delta c upon c plus q into delta d upon d. It means absolute error of result equal to power of a into absolute error of a plus power of b into absolute error of b plus power of p into absolute error of c plus power of q into absolute error of d. यस, तो बच्चों यदि कोई फॉर्मूला ऐसा है जिसमें हमारे पावर्स भी हैं, क्वांटिटीज भी हैं, तो हम एरर में इस प्रकार से चेंज करेंगे एब्सोल्यूट एरर के फॉर्मूले में. ये यस, वी विल डिस्कस some approach of that power, how can be written in differentiation mathematical tool. Yes, now how this can, if numerical obtained in that approach, we solve by that method. Derivation we will not attempt. This is we only discuss for numericals. Yes, students, so in this session we have discussed combination of error involving addition, division, subtraction, multiplication and division, and some two formulae for numerical purpose, how powers convert into error. In next session we will discuss numericals related to error analysis. Thank you.